as I mentioned, that this itself is a great opportunity that when we gather together, that too in the fine morning, to collect some knowledge, to enrich ourselves for the way forward in our profession and in our life. And thanks to the organizers for giving all of us an opportunity. We have the benefit of presence of Pradeep Goel Bhai, benign presence, really great, and all you will learn it, my learning and colleagues, ladies and gentlemen. I will begin with my deliberations with one expression which I am putting forth boldly and unhesitatingly, and that is welcome to the new legal era. You must be thinking why I am saying so. What is so special about it? Why I am saying this new beginning of a new legal era? And there are many reasons for this. So one by one, as we progress, I will give you the things before you, for which you will be convinced that yes, something new has begun. First among them is that when dispensation has brought out new legislations which are totally new in the country and which have seen the force in last decade only. And in last few years, particularly 3-4 years, they have really started showing their real force and colors. The unique thing or special thing about these laws is that they do not work in isolation. They have a strong interplay, strong interconnect, strong cross impact. So I would say I will make another universal statement and compare to the situation which we are facing here. And the universal statement is all is interconnected. Particularly those who have even little bit spiritual bent of mind, they will understand what I am saying. All is interconnected in the universe. And so is in these laws which we are talking about, particularly laws dealing with economic offenses, financial crimes, commonly known as white collar crimes. Therefore, when we talk about making legal compliances or doing the things rightfully or safeguarding the legal interest of ourselves or of our clients or business entities or any class of citizens, whether belonging to business, politics, profession, service, wherever. I am talking about all classes irrespective of them. Then we have to plan out and understand their transactions, their business affairs, their financial affairs in a holistic manner. Because as I mentioned, all is interconnected. So by planning out isolation on the one subject is not going to be sufficient now. As our government has realized it far ago, that tax laws are not sufficient in themselves in handling the dent in the economy, the problems in the economy which we are facing. That is why all these laws were brought out in the picture. And therefore, since these laws have been brought out in the picture, they are impacting in such a manner that if I plan or examine a transaction from one point of view only, it is quite possible that I am safeguarding under one law, but I ignore the imposition or application of other law or possible violation of the other law, and I have taken the transaction out of the small ditch but pushed into the deep valley of another law. It is quite possible, and I can explain with the help of an example which I'll put, and I think with the help of an example you will understand what I am going to say and it will set the ball rolling. This case belongs to some city in MP, Raipur or Chhattisgarh or Bhopal. What happened? A search happened at the business premises of the big businessman of the city.
So to conclude the search in an expedient manner, there is a practice or ritual of making some offer, as we all know. So for whatever reasons, there are multiple reasons for this. From the demand is of the making offer is from the other side also. The person being searched also thinks, okay, let me offer something to tax and let it conclude the proceedings, because by the time mentally also a lot of stress has already happened, financially also a lot of damages are done, business is stopped and all that. There are multiple reasons. So surrender letter was made, and that surrender letter included one breakup of total amount of 35 crores, and the breakup amount included a sum of rupees 10 on account of bogus share capital received by his company R Limited. His name is Mr. R, by R Limited, from a company named as B Limited of rupees 10 crores on account of share capital, which was written in the breakup as bogus share capital received from B Limited by R Limited. So whatever taxes are applicable, say at the rate of 60%, that they were paid, and matter was concluded. That is what the said businessman thought. Because within few days, say a month, another notice comes up from, this time from Benami Prohibition Unit. Initiating officer calls him for recording of the statement under section 19 of PPPT Act 1988. He thinks on this, with this regard, why they want to call me? I have already paid taxes. So raising his collar's up, he goes to attend the recording of the statement. He says, yes, sir, but you want to ask? Please ask him. Yes. So you have accepted in this that this is a bogus share capital. Yes, sir, I have already paid tax also on that. Okay. So bogus means before receipt of check, you paid cash to B Limited, and in return, B Limited issued check to R Limited. Now there is sudden silence as if something has written. Because probably he could feel that something wrong may happen now. Now his silence will not convert into no. So IU proceeds. So that means you B Limited gave check after receipt of rupees 10 crore in cash to R Limited. R Limited in return issued the share certificates to B Limited. Share certificate. So the company R Limited. And utilize this amount partly in depositing the bank account in FDR and partly in construction of the office building, as the facts reveal, as has come out in your statement also. Now again, silence. Answer is of course yes. Cannot say no now. Everything is admitted. So what IU does finally is he makes attachment of the shares as Benami. He makes attachment of the FDR, being proceeds to Benami property, and he makes attachment of the balance office building also being constructed from the Benami proceeds. So on the one hand, taxes have been paid. So if it is unplanned action, then you can see the consequences. If it was a planned action, then probably visualization could not be done. Whoever planned it, his advisor or himself, or the officer who is conducting the search, maybe he knew or he did not know what is going to happen now, because he was concerned with his own agenda of making the search successful. And search was successful because 25 crore rupees surrender has been made. But at the end of the day, and it is success or painful story again. I do not know whether the share capital was offered just for the sake of offering, whether it was bogus or not, whether it was actually bogus. God knows the facts. But that is how the things happened. And the things are before you. Now, please tell me, I want to seek your opinion here. Let's make it a party session. What is the defense available with the person? Can he say, I have paid the tax, don't have make attachment? Can he now contest the attachment under Benami law? I think it will make my task easy. The moment I understand your views and you become participative, I will set the ball rolling accordingly. Will the two punishments can be made for the same first reaction? So that is one of the contentions which can be taken as two punishments. Yes. One of the contentions is any other. I surrendered just to buy a piece of mind during the tax proceedings. And when I will fight, I will take my step. So whether in the statement you said this, though share capital is genuine, but I am not able to substantiate it. Rather, you said it is bogus share capital.
Yes, any other response or reaction or thought? अच्छा, one thing I would reveal, ये law किसी को पूरे नहीं आते, मुझे भी नहीं आते. Welcome sir. Welcome, sir. Welcome. Let us welcome Kepka ji. ये law किसी को भी नहीं आते, तो इसलिए उसमें hesitation क्या रखनी? Or कोई thought, anything which comes to your mind? How do you save the person now from this such a painful experience which he is passing through? So, validity of the whatever statement reported during the search operation, it was the ban in Benami. Whatever legal validity of the whatever I said in the index proceeding and what I'm saying in the Benami law. अच्छा, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अब वो खुद ही उसने जब बोगस कहा है, खुद लेटर दे रहा है, ये भी कह सकता फोर्स था. अरे आप ही ने लेटर लिख के दिया है भाई, तो ये प्लीडिंग भी करेगा तो कहां तक सस्टेनेबल होगा? So at the best, what he can contest is whether attachment has been made in the rightful manner, whether all three things can be attached. Only Benami asset can be attached. Thing will be attached because he himself said. So if technically speaking it falls within the definition of Benami examined, then at the most Benami property can be attached. That is the only difference you can have. And here the Benami asset, according to my understanding, would be shares only. The amount received by the company is not proceeds of Benami asset. Proceeds of Benami property would be when the shares will be sold. So at the most that will be the contention. 1. 2, sir, you said double jeopardy. Double jeopardy is for, suppose he is paying tax 60% and he is asked to pay again tax on the same in some other manner, then it will be double jeopardy. Now if by one action a person is committing 2 offenses, for example a person went for dacoity, while dacoiting he did some manhandling also, hit a person also, did some murder also. तो कहने पर्सन से कि सर मैं तो सिर्फ पैसे लेने गया था, मर्डर में क्यों बुक कर रहे हो? वो तो गलती से करना पड़ा मुझे डिकॉइटी करने के लिए. Can he say it like that? Similarly, here also, if many offenses are happening in execution of one transaction, and every offense will have its own consequences under the law, in whatever manner. So therefore, the double jeopardy, forget about it. And one thing more, sir, which I want to say right from the beginning itself, and that thing is, there is a fashion now that every statute, whenever drafted, contains one provision, and that provision is that provisions of this law are in addition to, not in subjugation of provisions of any other law. Further, in case there is any inconsistency, then the provisions of this law shall prevail upon the provisions of any. So that means each law will have its own scope of operation. All are offshoots of the constitution, all are siblings, they will have their own methodologies. Yes, कहां से कौन शुरू होता है, कौन खत्म होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबका स्कोप सबको अलग रखना पड़ेगा, सबको उनकी ड्यू वेटेज देनी पड़ेगी. और डबल जेपड़ी की कोई बात नहीं है, ये निकाल दीजिए. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये सारी बातें निकाल देते और हम कहते हैं सबका एप्लीकेशन होगा, तो इसका मतलब एक ही बात है कि हमारे को सभी ट्रांजेक्शंस को डिफरेंट एंगल से एग्जामिन करना चाहिए. जो मैं करने जा रहा हूँ कंप्लायंट फ्रॉम टैक्स लॉ, यस, बेनामी तो नहीं हो रहा, इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का कोई प्रोविजन एट्रैक्ट हो रहा, मैं बताऊंगा कैसे कैसे हो सकता है, कहां even for buying property, even for selling property. You can buy a property which is a tainted property. You can sell a property and receive the amount which was proceeds of crime in the hands of the buyer. Anything can happen. So कहीं PMLA का proceeding तो नहीं हो रही, कहीं FEMA की violation तो नहीं हो रही, कहीं कोई custom तो नहीं हो गया, कुछ कहीं violate बीच में, वो over billing, under valuation करते गए, कुछ इधर उधर करते गए. ये सब examine करना चाहिए from all angles. Then we can say we are compliant. Something like that. So that was the theme on which I wanted to give my deliberations, and I have put the theme across to you. And today, today's uniqueness is that by God's grace, we shall be able to cover all facets related to economic offenses.
व्हेन आई से ऑल फिजिक्स, अब तक हम कंफाइन करते थे फाइनेंशियल फिजिक्स, उसके अटैचमेंट फिजिक्स, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस लाइक टैक्स हो गया, रिकवरी या मनी अटैच हो गई वगैरह वगैरह। उसका जो क्रिमिनल साइड है सर, प्रोसिक्यूशन होना है सर, जेल में भी जाना पड़ेगा उसको यही काम करने के लिए, जो मैंने भी बताया इसमें जेल भी है सर। अभी मैंने सुना वो तो बताया नहीं, अगर वो बेनामी एडमिटेड है तो इम्प्रिजनमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है और फाइन भी प्रिस्क्राइब्ड है। किस किस के ऊपर? यानी कि बेनिफिशियल ओनर और बेनामी का। अगर मैं बोलूं कोई और भी है इसमें तीसरा जिसने एडवाइस किया, इनसे पूछा गया कि लाला जी आपने ऐसे ट्रांजेक्शन क्यों किया? सर मेरे सीए साहब ने कही थी। हाँ उस पर भी आएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो सिचुएशन रिलेशनशिप टोटली डिफरेंट है, हम कंफ्यूज ना करें। Giving a legal opinion, and this is I think I will request, I am reserving for Kemkati, what is the distinction between that? When we have to learn to deal with arms and price, involving into a transaction before commission of the execution of the transaction, and giving legal opinion on something which has already happened are two different things. Apart from the legal provisions में भी फर्क है कि उनको privileged communication का जो benefit है available है, हमें अभी legally नहीं है, वो एक अलग बात है। उससे अलावा मैं उससे पहले ही बात कर रहा हूँ, उनको क्यों है हमें क्यों नहीं है, उसका रीजन ही यही है कि they are not part of the transaction as a lawyer, as an accountant. Unfortunately, some of us become part, and that is where the wrong happens. That wrong should not happen if you want to have a peaceful life. I hope Khemkaji will be able to explain it in a much better manner because he is able to look at the arm's length distance कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। मैं भले ही अब I am practicing as a lawyer, but I am born as a chartered accountant. कुछ गलतियां जो मेरे सीनियर्स ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे हुई, मैं उनके साथ करते तो वो हो सकता है मैं अभी भी अननोइंगली कंटिन्यू, and he is witnessing it since my birth as a chartered accountant. हम लोग क्या सही क्या गलत करते हैं, we must hear and we must realign and reset ourselves after it. And that's the whole agenda. Agenda is not to create fear. Agenda is to know the truth and accordingly follow the path of life and profession. That's the whole idea. Sir, मेरी कुछ slide देंगे? Apart from the one thing more, जो आपको लगेगा out of touch है, out of context है, but मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ उसमें से ड्राइव हो रहा है। While studying Benami laws and few laws around it, मुझे तो ये भी गाइडेंस मिली कि लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द बिगेस्ट डिसीज ए ह्यूमन बीइंग इज फेसिंग टुडे, उसकी बिगेस्ट डिसीज बताओ। उसका रीजन Art of living. आर्ट ऑफ लिविंग, ये मैं तो बिगेस्ट डिसीज पूछ रहा हूँ। स्ट्रेस उसका रीजन जो कॉज है, तो ये तो उसका प्रोडक्ट है, पॉइजनस फ्रूट है स्ट्रेस। तो फ्रूट क्या है, मतलब वो पेड़ क्या है? Expectations and reality. हाँ, वो जो गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन रियलिटी है, वो भी किसी पेड़ पे लगने वाला फल है। वो पेड़ बताओ क्या है? Desire. To earn more. सारे फ्रूट्स हैं उसके। मेरे को एक पेड़ नजर आता है सर, जिसकी वजह से जिसपे सारे फ्रूट लगते हैं, और उस पेड़ का नाम है लिविंग ए बेनामी लाइफ। थोड़ा सोचिएगा, हो सकता है पहले कभी दिमाग में नहीं है इसलिए अभी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगे। If I am able to remove Benami element from my life, I can assure you 15 उसमें से 50% चीजें जो भी आप नाम ले रहे थे ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगी। सिर्फ इतना कॉन्शियसली सोचते कि क्या क्या बेनामी एंगल है मेरी लाइफ, मेरे कंडक्ट में, मेरी थिंकिंग में, मेरी वर्किंग में, उसको हटा दीजिए। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस, एकदम से सोचना इस बारे में। तो इसलिए हम कब कब बेनामी ट्रांजैक्शंस कर जाते हैं हमें पता नहीं लगता, क्योंकि जब ये लॉ शुरू हुआ था तो ये बातें ये आई थी कि सर ये जो बेनामी है सर ये कैसे पकड़ेगा डिपार्टमेंट, पकड़ नहीं सकता। तब ये बातें हो गई। अब आज क्या हो रही है बात मालूम है, जब बेनामी तो आप बचा ही नहीं सकते। लेटर में सर हो रही है सर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज, फ्रॉम मेनी रीजंस, फ्रॉम मेनी वेरियस एंगल्स लेटर। तो हमारे को पहले बेनामी लॉ समझना पड़ेगा, इसके साथ साथ हम कब कब बेनामी लाइफ कहाँ जी रहे हैं वो समझ में आ जाएगी बात, एंड वाइस वर्सा।
Let's start the journey, start the tour. There are 26,000 ways and more than that for which a businessman can be put into jail as has been mentioned in the result. कुछ नोट करने होते हैं, बस अपना फोकस अटेंशन उस पर रखिएगा कि क्या टेक अवेज क्या है आपके, और वो राइटिंग तो आपको मिल जाएगी. देन सीबीआई एंड ये सब आप कोऑर्डिनेटेड एजेंसी करने वाले हैं. वो जो मैं बात कर रहा था, वेलकम टू न्यू लीगल इरा, एक रीजन उसमें ये ऐड करनी चाहिए. ऑल एजेंसीज आर गोइंग टू टेक कोऑर्डिनेटेड एक्शंस. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. ये तो पुरानी हो गई न्यूज, लेकिन उसके बाद से नयापन आ गया, क्योंकि अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक ऑर्डर पास किया है और उसमें ये लिखा है कि जो पुराना ऑर्डर था एनवी रमन्ना साहब का, that requires that has been recalled. So a fresh hearing has to take place now. So hitherto we were thinking that transactions prior to 2016 are now saved out of the ambit of the new law, but there is a rethinking on this, and let's see what the new judgment would say. And para 7 of the judgment authored by Honorable Justice D.Y. Chandrachud says that wherever relief has been given on the basis of old judgment, the department is liberty to revive them. So department is starting filing review petitions in lock, stock and barrel. A huge number of review petitions have been filed. So we are back to square one. Then many, as I was saying, information sharing mechanism has been made very robust by creation of very notifications, MOU, blah, 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 but not. So technologically, legally, both ways, they have said that information has to be free flow between the agencies. I mean, up to SEBI, etc., is also now covered within the same mechanism. These notifications, in which the list of agencies who are duty bound to report to the ED for any potential transaction leading to money laundering, that list has been enlarged now. Even NIA has been included, SFI was included, state police departments. You imagine an agency name is there. All possible agencies have been mentioned. Then another reason which I wanted to say, that connect is very wide. One is interconnect, and the canvas is very wide of each of the law. So wide, expanse is so wide that on the basis of common sense we cannot arrive at a conclusion कि अच्छा इसका scope इतना ही, जब तक exactly पढ़ नहीं लेंगे. Which will be evident from the two case studies which I will put before you. First is this, and second one I will bring after that. Two chimpanzees are attached by the enforcement directorate. आपको इमेजिनेशन से सोच सकते हैं, जो भी चिंपैंजी लेके आया होगा कि सर इसको ईडी भी आ जाएगा, वो सोचा होगा यार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से कोई फॉरेस्ट ऑफिसर आएगा, ईडी वाले आ गए, ईडी हमसे चिंपैंजी. मेरे लिए भी बड़ी खबर जब मैंने पढ़ी तो मेरे को बड़ा चिंता था कि ये ईडी का चिंपैंजी हैंडलिंग से समझ नहीं आई बात. तो मैंने फिर उसकी रीजनिंग पढ़ी है. रीजनिंग वाज विद इन द लीगल फ्रेमवर्क. The person has committed two offenses. One, Wildlife Protection Act. Another, he did some forgery in obtaining the certificate with regard to the custody and all that. Certificate चाहिए होता है under Wildlife Protection Act. So that is punishable under IPC. And both these offenses are part of scheduled offense. And we will discuss about it. What is scheduled offense? I and Kim will both will discuss at our turns. So, and section 5(1) of PMLA says that any proceeds generating out of scheduled offences, commission of scheduled offences, is liable for attachment under section 5. So, scheduled offense हुआ, उसकी ये proceeds हैं, liable for attachment. So that is how that is done. This case study belongs to a distillery unit which was set up in Jaipur for manufacturing some alcoholic products. 500 workers were working in the factory. Some water treatment plant stopped functioning well, and because of that, pollution control board came into action and filed some FIR complaint in the relevant court of Jaipur. And probably thereafter, the repairs were done in the water treatment plant. So no further action was taken by PCB, and matter was pending like that. But in the meantime, after a few years, ED jumped into the picture and issued provisional attachment order attaching the factory building. अब water treatment plant काम नहीं कर रहा, इस ground पे factory building attach हो जाए, बात समझ नहीं आई. Order पड़ा, और order में reasoning, actually it may be wrong or right, but reasoning was legally correct. How? That I will give before. That your water treatment plant was not functioning, and it is also noticed that excess water
was discharged into the river. Excess means beyond the license capacity. License capacity is 50 kl and discharge is around 75 kl. That is revealed from various returns and blah blah blah. So this excess discharge of water denotes excess production happened. Excess production has resulted into extra sales. This excess sales is unauthorized sales. So profit arising out of excess unauthorized sales is unauthorized profit, which is illegal profit. Illegal profit is proceeds of crime. Because Air Water Pollution Control Act is a schedule. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से जो भी जनरेट हुआ उसके वायलेशन से वो proceeds है। इस तरह से नॉन मॉनिटरी और वो सब आपने फैक्ट्री बिल्डिंग में लगाया होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग में सब proceeds होता है एंड देयरफॉर ऐसे तो सर जितने भी यमुना के अंदर जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो भी सारे और जितनी फैक्ट्री या दानी लेयर और Probably सारी government property जैसे they are the polluters. Because the government is the biggest polluter. if the facts are like that, then as per law they are liable, irrespective of their profile, their background. So, on the basis of common sense, if that gentleman could have imagined कि इसमें ईडी भी आ सकते हैं, तो वो पहले रात को घर नहीं जाते वो सोने, पहले कहते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज ठीक होगा, उसके बाद में देखा होगा, जब उसके बाद फैक्ट्री का प्लांट ऑन होगा, उसका बिजली का बटन तभी ऑन होगा, जब ये पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक कर दिया। So therefore, holistic awareness. अच्छा, स्टोरियां खत्म नहीं हुई, सॉरी, लेट मी बी कंप्लीट। उसके अगेंस्ट फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। ईडी ने एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए अगेंस्ट द देन डायरेक्टर, दैट यूनिट कंपनी डायरेक्टर। और बेल कहां से मिली? सुप्रीम कोर्ट से जाके। इनका जी हैड आल्सो टू जोसल लॉट ऑफ गेट द बेल। इन दिस केस जहां कोई वैसा ऑफेंस नहीं है जिसको हम अभी एक्चुअली ऑफेंस समझते हैं। So, welcome to the new legal era. With the help of this pictorial presentation, I have tried to show that how the laws are impacting each other. For example, even in SBO, significant beneficial owners reporting concept, you have to report that who are the shareholders in front and who are the shareholders in the back. One of the clauses is like that कि उसकी रिपोर्टिंग अगर आप इस तरह से करेंगे तो it will be a case right for Benami under section 29 bracket A. Further for BPU. So what would you do? We'll say कि non compliance हम नहीं दें तो आप non compliance करने कैसे होंगे? अच्छा तो आपने सर मैंने compliance कर तो दी तो फिर मेरे पे क्यों Benami law लगना चाहिए? जब compliance हो गई तो फिर मैंने तो compliance कर दी, बट आपने compliance किसकी की? आपने इस बात की कि हाँ आपने शेयर्स इस तरह से रखे होंगे। इट्स लाइक कि आपने जाके डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैंने रेड लाइट जंप की सर, व्हाटएवर रीजन, तो क्या कोई चालान नहीं लगना चाहिए? तो द इशू कम्स कि मेयर डिस्क्लोजर विल नॉट बी एनफ। ए डिस्क्लोजर्स दैट इज ट्रांसपेरेंसी, बी एस्टैब्लिशिंग दैट व्हाटएवर हैज बीन डन इज राइटफुल। दो रिस्पांसिबिलिटी हो गई अब, डूइंग द थिंग्स राइटफुल and recording the records, retaining the records and material to substantiate that whatever we are doing is right. और यहाँ तो डिस्क्लोजर हो गया, डिस्क्लोजर का पर्पस ये था जिससे क्या गलत कर रहे हैं आप पकड़े जा सके। आप तो आपने बता दिया हम ये गलत कर रहे हैं जी, बेनामी रखे होंगे शेयर्स, दे आर लायबल। तो मैं कभी-कभी ऐसे लाइटली, अभी एक बात ध्यान आती है एग्जांपल के लिए, आप घर गए रात को लेट पहुंचे और योर स्पाउस आस्क्स यू कि लेट क्यों आए, अब आपने बता दिया रीजन। अब आपने सिर्फ बता दिया रीजन तो ये नहीं कि आप एब्सॉल्व हो गया, अब आपने क्या रीजन बताया इस पर डिपेंड होगा कि आपका ट्रीटमेंट अब क्या अपना है। सो कमिंग बैक टू implications under income tax act on Benami or beneficial owner versus this, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन few things I think I will cover them up the history of the relevant laws. स्मगलिंग का एक एग्जांपल ले सकते हैं। स्मगलिंग में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इतने सारे ऑफेंस होते हैं सर, वन स्मगलिंग एंड सो मेनी ऑफेंसेस। वो पैसे बाहर रख रहा है, ब्लैक मनी हो गया, वो कहीं किसी और के नाम से बिजनेस कर रहा है, बेनामी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, एसएफआई इनवाइट कर रहा है, सर एवरीथिंग। तो सेविंग एसेट का प्रीमियम में जाएगा सर, अगर उसकी लिस्टेड कंपनी है तो, और उसने कुछ ऐसा काम किया लिस्टेड कंपनी में भी पंगलिंग किया, डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। एसएफआई आ जाएगा सबसे पहले तो,
हर कंपनी में कुछ हेरफेर हुआ है। सबसे डेंजरस सेक्शन जो है, अभी तक हमने खाली ईडी को डेंजरस समझा है। एक बार खेमकाजी सुनिएगा कि सेक्शन 212 ब्रैकेट 8 ब्रैकेट सेक्शन 447 ऑफ कंपनी एक्ट क्या मायने हैं। जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, हम उसके रियल इम्प्लीकेशन। मोस्ट लूजली वर्डेड सेक्शन, फ्रॉड इन द कंपनी, किसी भी बात पे हो सकता है। हमने कभी उसको देखा नहीं, इसलिए एसएफओ की बेल इज मोर डिफिकल्ट देन बेल अंडर पीएम। एंटी मनी यहां से शुरू करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे और चीजों पे जाएंगे जो हमें आज हम इसके लिए करें। क्या हम यहां से शुरू कर सकते हैं कि मैं आपसे ये पूछूं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? आप अपना गैस वर्क व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज मनी The process of crime इसको हमने फिर प्रॉपर चैनल पे डाल दिया उसको। लॉन्ड्रिंग। एनी अदर गैस? To hide the substance of a transaction. To hide the substance of transaction. The word proper channel is also, sometimes a misleading word. There should be channel mechanism to proper and improper क्या हो सकता है? मतलब just a thought है दिमाग में। तो नहीं मतलब ऐसे एक्टिविटी कर लिए लेकिन लॉन्ड्रिंग कर दी, प्रॉपर चैनल में डाल दिया। Yes, Pradeep sir. Illegal तरीके से Means to convert the nature of the transaction. To hide the deal, it's supposed to, I'm giving a loan to you and I'm using some money. From different companies and bring it to your outfit ultimately. So, I mean, hiding the true character of it. Okay, any other guess? So money launderer क्या है? Basically illegal money को legal money convert करना. It's a money laundering. The converting black money into white मैं money. वेट कर रहा था Pradeep से। Much multi-layered. So conversion of black into white, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का तो टैक्स इवेजन क्या है? हमने तो ये समझा है conversion of black into white is tax evasion. तो इसको ऐसे समझते हैं लीगल व्हाइट मनी भी तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकती है। हाँ, तो इसको इस तरह समझते हैं, अगर सिंबॉलिकली कलर से समझना है तो ब्लैक इनटू व्हाइट इज akin to tax evasion and conversion of red into white is akin to money laundering, where red denotes blood, in turn it denotes crime, and white denotes purity, innocence. So something illegal being shown as legal. Now something का मतलब क्या होगा कि मनी, क्योंकि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, तो मनी which is derived from illegal sources, as you are saying, from crime, is being portrayed as if it is not derived from crime. It is legit. So smuggling की दिखाया income from trading or income from consulting, etc. That is broadly speaking money laundering common parlance, as we can understand common parlance in terms of in legal common parlance. तो इलीगल क्या है उसको समझ लेते हैं। तो आप इलीगल कोई लूजली यूज वर्ड तो हो सकता है, इलीगल के तो कई मायने हो सकते हैं। तो लीगली मींस समथिंग which is prescribed in the schedule appended with the PMLA, that is which is called as schedule offense. तो PMLA एक्ट के साथ एक शेड्यूल है जिसमें बहुत लंबी लिस्ट है ऑफेंसेस की, IPC, Prevention of Corruption Act, all these environmental laws, customs, Black Money Act, दोनों है, उनकी वायलेशन will be amounting to commission of schedule. उससे जो मनी जनरेट होगी उसको आप ले करेंगे। अब आप पूछेंगे सर कि इनकम टैक्स एक्ट मेंशन है उसमें? नहीं, ये उसका मतलब टैक्स इवेजन विल बी मनी लॉन्ड्रिंग इप्सो फैक्टो, but what is there? Hold on, there could be certain situations where even tax evasion can lead to money laundering also. And kindly keep this question in reserve. I will request Kimpali to explain it how in the person. Sir, is GST is also a GST and income tax both are not there. Otherwise, so far, income tax enforcement directorate would have been much larger than any other organizations of the country, including GST, income tax, all. Because then every case will go there. Yes. Then they will not be able to handle even. So maybe for this reason, maybe some fight of egos. So far, so good.
but there is no total clean chip also. That we need to understand. अभी मैंने दो तीन टाइम से मुझे भी यूज बड़ा था जी और डीडी की तरफ से मैंने मैटर बट एक्चुअली आई सी 4 or 5 मैं टाइम किया मैंने convictions. कन्विक्शन So that is a happy state of affair or disappointing state of affairs. You want more convictions to happen. tons of harassment sir Conviction हुआ नहीं, क्यों परेशान किए जा रहे हैं, ये मतलब है. या कई सारे मायने हैं. सर वो भी फिर बेनामी ट्रांजैक्शन में आ रहे थे सारे वीडियो ऑफिसर भी कहना है सर इसके कई सारे मायने हैं. And let it be unfolded by Kinka ji using his expertise. I can also put forth, but he is going to speak lot many things which are of our relevance. कैसे आपको इन्वेस्टिगेशन का सामान आ गया, सेक्शन 50 का, PMLA का कैसे हैंडल करना है, इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल आया तो कैसे करना है, इन द कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट आया, क्लाइंट के आपको कैसे करना है, या किसी क्लाइंट को एडवाइस करना है कि उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे हैंडल करना चाहिए, समन कैसे हैंडल करना चाहिए. चलो अरेस्ट हो गया तो बेल के लिए क्या एफर्ट्स होनी चाहिए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है बेल में, कैसे आप बेल पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं अपने क्रिमिनल लॉयर को, इमीडिएटली आपको कब इमीडिएटली अपने जो लॉयर हैं जो PMLA के एक्सपर्ट हैं उनको कब इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए या खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, या अगर कॉन्टैक्ट कर लिया तो उनको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके रोल के बिना वो जस्टिफाई नहीं कर सकता था. ये मेरा अगला वाक्य था इस बात के लिए कि वेलकम करेगा दैट नो सिंगल प्रोफेशनल कैन हैंडल द लॉ. वो ना द केस, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद क्लाइंट्स. इट्स लाइक मेडिकल साइंस में भी पेट दर्द का डॉक्टर वो उनके आंखों का इलाज करने लगेगा तो जो होगा सिचुएशन सिमिलर टू दैट इज हैपनिंग एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल. अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन पे ही हमें अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना चाहिए. सुपर स्पेशलिस्ट को साथ लेके चलना चाहिए. सुपर स्पेशलिस्ट अकेला भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पूरे फैक्ट्स नहीं पता, तो जो मेन डॉक्टर है वो और साथ में दो डॉक्टर, दैट इज हाउ दोज हु आर डूइंग दिस दे आर सक्सेसफुली. इसलिए मेरे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स केस आता है उसमें मैं, प्रियंका जी, हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, हमारे कई सारे लोग जो साथ में और डिफरेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जोड़ते हैं, जो कोई हम जस्टिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, अदरवाइज कुछ ना कुछ कमी रह जाती है. वेलकम टू द न्यू लीगल era. So many questions are arising for this money laundering, tax evasion, as I have already explained, punishments, इस सब डिस्कस कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होगा, बोनाफाइड परचेजर और दोनों की क्या सिचुएशन होने वाली है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. और बिगेस्ट क्वेश्चन, बोनाफाइड परचेजर जो होगा जिसने किसी एक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाले से कोई प्रॉपर्टी ली होगी या उसे गिफ्ट दिया होगा, जैसे जैकलिन फर्नांडिस ने गिफ्ट दिए थे स्पेशल चेक से, तो उनकी क्या सिचुएशन होगी. मेरे पास कल एक और मैटर आया सर which is pending for discussion with you. That lady is really in trouble. She called me. Sir, मेरी क्या गलती है, मैं तो फ्लैट मिला था तो मैंने क्या गलत किया है. अब वाकई लॉ की बड़ी टिपिकल सिचुएशन है कि लॉ इज नॉट मेकिंग डिस्टिंक्शन दैट इन द जेन्युइन कैपेसिटी यू हैव रिसीव्ड or in out of relationships, or I mean it was some ill will because of you received the gift. I mean if it is money proceeds of crime which has come to you, that attachment has been made. And it is a tough fight. I do not know how the courts will be able to come to rescue of such a person. Either bona fide with it. So, and these are the things to ponder over and understand and be careful while dealing with any person. तो मुझे तो एक ही बात याद आती है सर, मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी ने, पापा ने जो बचपन में कही थी जब मैं स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था, बस बेटा बाकी वो कोई शिक्षा का ज्ञान और नहीं ज्यादा मेरे को इम्पोज करते थे, कैसे पढ़ाई करने का मेरा संगत अच्छी लगता बस. तो आज इसका मतलब अब समझ में आया. मेरे जितने क्लाइंट्स ज्यादातर मेजॉरिटी, तो लॉन्ग हो सकते हैं जो मेरे पास नहीं है, पर जो ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर वो हैं जिन्होंने दे हैव डन डीलिंग नोइंगली और अननोइंगली विद अ पर्सन हु वाज एक्यूज्ड अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग वाज डन. कोई सेम थिंग, नथिंग मोर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दोस फंडामेंटल्स आर हेल्पिंग अस अगेन, दैट्स इट. यस दैट्स हाँ, ये मेरे को जरूर टच करना है. कैन डिफॉल्ट्स इन बैंक लोन्स ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड कैन बी कवर्ड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग. This is the biggest question of the country, and maximum number of cases arising in the country are arising under this on this issue. Substantial number are where people have defaulted in repayment of bank. Now there could be multiple reasons, that it was a general business failure, or there was siphoning off, or offering was through fraud, or end use was not proper, or securities were not proper. There could be a combination of multiple. But as of now, I mean, all are under firing range, and what is the impact of that? That
Section 3 of PMLA defines money laundering. Just for the sake of completeness, I am reading it for you. Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition, or use, and projecting or claiming as untainted property, shall be guilty of offense of money laundering. Now, if you see, the word "and" has been put in red color. There is only one reason, to show that the next condition is integral part of the earlier condition. And joint reading is required. Both the conditions have to be filled. It is not an optional condition. It is, connected with the word "and." So, meaning thereby, not only earning of bad money will be necessary, but projecting their good money will be also necessary to make it a case of money laundering. Both the things are necessary. Somebody's, had stolen money, so mere stealing of money is not enough. He has to stolen money, so stolen has to be portrayed as good. That is what my understanding of the law is. But after insertion of this explanation, there is an attempt to tinker this basic fundamental understanding by using the word "or" in clause D instead of word "are," instead of word "and." Can you see in clause D, word "or" has been, and which is now shaking the condition. Okay, it is even if this person has done just theft, that is enough to make it money laundering. My understanding is main section, that is this section, should cover the correct legal position given now. So 3 stages we can carve out are necessary to make it a case of money laundering. A, commission of scheduled offence. B, generation of proceeds of crime. C, commission of money laundering by different means, that is placement, layering, integration, etc. What is proceeds of crime? To bring it to proper sense. Proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by any means as a result of criminal activity relating to scheduled offence or the value of any such property, or where such property is taken or held outside the country than the property equivalent in the value held in the country. One of the hottest controversial topic which is arising out of this definition is whether unconnected properties can also be attached, which has nothing to do with proceeds of crime. Answer is yes and answer is no. Answer is yes, because the way it is being implemented and forced as on date in the country. Yes, attachment is in more than 70% cases of these kind of properties, because main proceeds could not be found, so therefore they have attached whatever came in their hands. Answer is no, because of 2 reasons. If we read the law properly, the entire scheme of the legislation, that is, if you read 212, this section, and also various section 8, which deals with the obligation on the adjudicating authority and the special court, you will find that law clearly says property which is not involved in money laundering has to be released. So if some property has to be released, that means an attachment is not required, even if offence is done. But if property is not involved in money laundering, it should be released. So scheme of the act does not say, and it is not a tax law, it's a prohibitory law. If proceeds of crime is there, attached. If not, they are not there. It is vanished. Okay, it's not a recovery. Or punishment will be in the form of prosecution. That is my understanding. Maybe wrong, maybe right. And my understanding is supported by judgment of Honorable Punjab and Haryana High Court, Seema Garg, Kumar Pappu from Telangana High Court, Satyam Computers again from Andhra Pradesh High Court. And according to my understanding, latest judgment from Honorable Supreme Court in the case of Vijay Madan Lal also says the same thing. But one of the para has said something which is creating some confusion indeed, and that is why the Enforcement Directorate is making interpretation in the manner which is suits to them. That is, any property can be attached. Sir, I think yesterday in that Standard case, this item was touched upon Sorry, by sir. the court. Yesterday in the Standard matter, the district court touched upon this correct treatment. Okay, so what was the outcome? They came heavily on the ED. You cannot attach unconnected properties. Yesterday. That's good. Which means the option like value of any such property. अभी जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें क्या है, प्रॉपर्टी जैसे वैल्यूज की 1.5 करोड़ है, लेते वो 70 लाख 50 लाख है, तो ऐसे केसेस में क्या होता देखो, उसका जो पर्पस था वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी का, जो मैं समझाऊं कि मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपीस का कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किया, उसको इन्वेस्ट किया एक प्लॉट ऑफ लैंड में, जिसमें 40 लाख कहीं और से आया, 10 लाख यहाँ से आया, तो उसका सपोज 20% आपने इसमें से इन्वेस्ट किया, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20% दैट कैन बी अटैच्ड, दैट इज वैल्यू ऑफ एनी सच।
where things are mixed, right? I mean, tainted and untainted are mixed. So value of untainted is liable, is prohibition in that property. That is my understanding. एंड जो आपका क्वेश्चन है वो तो ये है कि जहां उनको सूट करता है उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, जहां ये सूट करता है कि उसको ओरिजिनल परचेज वैल्यू लेनी चाहिए, वहां परचेज वैल्यू लेंगे। उनको बोलेंगे अच्छा उस परचेज वैल्यू को मैं एफडी से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देन दे से नो ओके डू वन थिंग, देन ब्रिंग डाउन द करंट वैल्यू ऑफ दैट। सो वो थोड़ा दीज आर द ग्रे एरियाज। नाउ another things which I wanted to mention in the, and that is why I was saying that again and again, I'll again say before that, let me put for the time see. There are gray areas. Things can be interpreted in this manner, things can be interpreted in this manner, right? Now, the manner the judicial dispensation is happening or would be happening in the country in times to come, that the moment there are gray areas, they are likely to be decided this side, where the investigation agency side is, not in this side, particularly while dealing with these laws, for various reasons. So be ready for that. Therefore, be 100% compliant, so that you do not fall in the gray zone. You remain in the proper white zone only, and that is the nature of the art. And another reason, immediately simultaneously I'll add to it why it will happen it like that. Earlier, the thing was, okay, you have done something wrong, you prove that you have done something wrong. Next question is, okay, you have done something wrong, you prove you have not done something wrong. For example, if cash is found and there are no allegations about commission of offense, or there are no proof about commission of offense, scheduled offense, but still the burden will be upon you to prove what is the source of the cash. If you are able to prove the source of the cash and there is no burden, there is no proof of any commission of scheduled offense, okay, you'll get free. If there is no proof of commission of scheduled offense, but if you are not able to give the sources of the cash, still you will find it difficult to get release from attachment. So acquisitions, if once made, the burden will be shifted. And prove it is not like that. What is the legal position we will discuss, but that is practically going to be the scenario. And that is why I say, welcome to the new legal era. Scheduled offenses, I already explained in detail. I think you can raise the queries with him, that it is his domain of specialization. This is the reason which I see why the moment acquisitions are made, you will be asked to explain, because of reverse burden of concept, that is NVC under section 24 of PMLA. Though according to me, it reverses the burden partly, but the way section has been drafted or the way it is being understood, as if all three stages are presumed to have been shifted. Commission of scheduled offense, earning of proceeds, and projecting. All three are shifted as it is your burden. Whereas, according to my humble understanding, presumption about the first two stages cannot be taken. चोरी हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे आप प्रिज्यूम करेंगे? ये तो बर्डन प्रोसिक्यूशन का ही रहना चाहिए। उस चोरी से पैसा आया है या नहीं आया है, ये बर्डन प्रोसिक्यूशन का ही रहना चाहिए, और 24 उसको शिफ्ट भी नहीं कर रही है। तो वहां थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से the experience has become quite harsh while dealing with this law. So everything is comes under PMLA. Suppose we purchase a property, white is 50 lakh and black is 1 crore. You are In raising some an issue cases, which is one of the biggest issues of the country, that in the property transactions still there is transaction of own money, right? Cash component. Now, ideally speaking, unless it is connected with proceeds of crime, any commission of scheduled offense, PMLA has got nothing to do. But in given situation, now it will be a situation case to case, it will depend. A person who is already surrounded with many such allegations for of committing this offense, that offense, blah blah blah. And in the wake of those, in the background of those allegations, this also issue comes up. You know, it is proved that there was dealing of cash component. Then, in all likelihood, that source of the cash will be immediately connected with that offense, and burden will be shifted upon him. You prove it is from clean sources, not from this. ये जो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ये भी तो आपका जो है स्टैम्प वैल्यू कम दी गई है ना, क्या ये भी इसमें शेड्यूल ऑफेंस में आया? Yeah, evasion of stamp duty, I think it's not part of stamp. It's not part of scheduled offense. Otherwise, that is what I was saying. This department will become bigger than even some registrar office. It is already Property purchase in the name of, sir, property purchase in the property and other assets purchased in the name of brother registrar PMLA.
if payment is made by, suppose I paid this purchase of property in name of my sister, अभी payment is made सर, उसके लिए by. कोई और कानून वेट कर रहा है। ये जो काम आप बता रहे हो, इसके एक और कानून पे हम चर्चा करते हैं अभी 5 मिनट, उसको करते हैं उसके साथ। यहाँ PMLA का कोई अभी एंगल नहीं दिख रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, उसकी भी जरा आज PMLA में नहीं आएगा, बेनामी में तो आएगा सर। PMLA में आएगा नहीं आएगा ये पूछना पड़ता। अच्छा, बेनामी में आएगा ही, वो भी क्वेश्चन है। हाँ, तो वो क्वेश्चन रिजर्व रखिए, तब वो डील कर लेंगे, क्योंकि PMLA से थोड़ा दूर रखते हैं उसको, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। एक तो अच्छा काम कर रहे हो, सिस्टर के नाम से ले रहे हो प्रॉपर्टी, PMLA और आ जाए। लाइव PMLA में याद कर, उससे दूर रहना है। अब जैसे कोरोना आ गया चारों तरफ, लेकिन फिर भी दूर रहना है और बच्चे हम लोग प्रोटेक्शन करें। तो अब ये ट्रांजिशनल स्टेज है, ऐसा नहीं है कि लाइफ ही PMLA में, ट्रांजिशनल स्टेज है कि जहां आई मीन विजडम एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ गॉट मिक्स्ड अप। कोई थ्रेश आउट करके गलत करना है, ये सही रास्ता है, इधर गड्ढे हैं इधर खाई, सही रास्ते पे चलना है। और उसी लिए हम इकट्ठे होंगे कि एक दूसरे से ये बात समझें। ये सॉरी, web of actions. When ED's actions start, simultaneously actions will start under predicate offense also, tax department also, this department also. और ED के भी एक्शन दो तरफा होते हैं, एक तरफ अटैचमेंट, दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन। इमीडिएटली कई सारे एक्शन शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है अगर थिंग्स एंड रिकॉर्ड्स आर नॉट केप्ट प्रॉपर्ली, if the right approach is not followed in handling the situation. When ये केस, वो जो मैं कह रहा था, what about the most prevalent case जहां डिफॉल्ट हुआ in obtaining the bank loans or in repayment of the bank loan. And then what is the scenario? So a large size borrower, corporate borrower, took say loan of rupees 1,000 crores from consortium of bankers and defaulted in. And finally, FIR was filed because of whatever reasons in EOW wing of CBI. And because of the allegations made in FIR belong to the scheduled offences, ED came into picture. Now, predicate offence agency is going on the speed of the luck cart, and ED comes to the picture and takes the jet speed. And the implications are that wherever this amount of rupees 1,000 crore has gone in multi directions, dealing with so many people, they all will be subject to investigation to prove that the transaction with them, whosoever were recipients, was genuine business transaction or was an attempt to help the borrower, the defaulting company, in aiding in parking of the proceeds of crime. If the latter is correct, he is also equally liable. If the former is correct, then also some attachment is possible, but at least he will not be part of prosecution. This is the scenario. So now you tell me, while selling a property, would you not like to ask from the seller कि भाई तेरा source तो बता दो कहाँ से आए हैं कैसे? पहले क्वेश्चन बड़ा अजीब. It used to be an attack on his privacy. Now it's not. He has to give a certificate कि मेरी sources क्या हैं. We get it for every client now. We are getting it prepared. He has to explain so that at least you become due diligence, so that you can put forth your argument as a bona fide buyer or seller or whatever. तो सर ये जो मैंने 1,000 छोटा सा जी सर, normally CA facilitates the borrowing by making a project report or touch upon this also sometime. though I wanted Kimka ji to take it deliberately in detail, but I will give a brief background. Again, the same thing in nutshell. If you have done your work at arm's length principle with full due diligence, you have acted as a consultant. If you have acted in a manner as if you were part of the transaction, then you have acted beyond that capacity, and then be ready to get the action beyond that capacity. For example, the project report to justify करनी चाहिए 1 crore rupees. A person has prepared project report for 10,000, say 10 crores of loan rupees, and in that process he collected some bills, some bogus this, bogus that, blah blah blah. It's different from the thing where and only pure legal opinion has been given.
somebody was asking me question yesterday कि सर अगर मैं बैंक सिग्नेटरी हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? This is the biggest question. जो रिपोर्टिंग एंटिटीज वाला नोटिफिकेशन आया था मई 2024 में, 3rd May and 9th 23, 3rd May 2023 and 9th May 2000, ये बहुत कुछ कहता है। इन नक्शल में से पूछो तो ये कहता है यार कुछ बन जाना रिपोर्टिंग एंटिटी बनता है, खुद बन जाना डायरेक्टर अपनी कंपनी चलाने ना, प्रैक्टिस छोड़ के वो बेटर है किसी और के पास। ये पहले भी मैंने सुना था आज से कुछ साल पहले, अब तो ये नोटिफिकेशन आ गया तो हो ही जाए। तो रिपोर्टिंग एंटिटी की जो एलिगेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो बहुत मुश्किल है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज भी मिल जाए तो वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, वो फैक्ट नहीं जान सकते। रॉ मिल जाए, आप CIA ले लीजिए, सबको ले लीजिए, मोसाद ले लीजिए, वो मिलके भी नहीं वो इन्फॉर्मेशन दे देते। इन्फॉर्मेशन क्या है कि हु आर द पर्संस, जो आपका क्लाइंट है उसके पीछे कौन बेनिफिशियल ओनर है, क्या आपको लिख के देना है। अरे भाई ये तो अंदर ही बताया गलत बताएगा, सही बताएगा, पार्टली बताएगा, लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। और आपने गलत बताया, ये नहीं बताया जाएगा कि ओनर ने गलत बताया, उसको तो पता नहीं क्या होगा, आपने गलत बताया। जैसे सी सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन फंड का भी देते हैं, बैंक वाला मांगता है। देखिए कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है, बिना रिकॉर्ड के नहीं देना है। जब ये सत्यम कंप्यूटर्स की केस हुआ था तो उस समय उस बात पे कि सर हम कैसे पता लगाएंगे, पता है सब जहां तक उस टाइम हम इतने इग्नोरेंट थे, हमने उस बात पे सरप्राइज किया था कि हमें क्या पता सर एफडी रखी भी नहीं रखी। अरे क्यों नहीं यार, ये तो बेसिक चीज है यार, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सी एट लीस्ट दिस मच। So we have to articulate our working in the rightful manner. Responsibilities on us to do our profession in the rightful manner, in a proper manner where I am walking on my path with full confidence and fear. Then law will save me, not otherwise. Because the consequences are very damaging. आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा प्लीज, और my request 3rd May 2023 and 9th May, वो उस पे तो एक पूरा ही डेलिब्रेशन के लिए एक पूरा ही सेशन चाहिए 2-3 घंटे। देन ये जो भी मैंने बताया कि सपोज दिस जेंटलमैन, दिस कॉर्पोरेट बोर्डर नीड्स योर हेल्प, सर मैंने 1000 करोड़ कहीं मिस अप्लाई नहीं किए, कहीं साइफन ऑफ नहीं किए हैं, और पूरा लोन जेन्युइनली लिया था, पूरा लोन जेन्युइनली यूटिलाइज किया है, अपना लॉयर नहीं कर सकता है। और जो करते हैं वो फिर बेल भी नहीं मिलती है और केसेस लटके रहते हैं। वही हमारा रोल आता है कि हम अपना रोल डिलीजेंटली बना सकते हैं, हम फाइनेंशियल ट्रेल, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं, एंड यू कैन स्टैंड विद द लॉयर ऑन द criminal side, criminal respondent side, to help him so that that lawyer, learned lawyer, can explain it in terms to the concerned judge and concerned judge can understand it. तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाए कि हमारा कैसे उसमें असिस्टेंस हो सकता है। फाइंडिंग आउट द सोर्सेस of proceeds of crime from commission of an offense, identifying the properties to be attached acquired with POC, identifying the source of such properties and connecting it with the POC, identifying loan utilization in attached property, calculation of correct value of POC, valuation of the property attached and comparison with the alleged POC, proper financial accounting analysis, preparation of money trail for the attached properties to demonstrate the source. This is all about money laundering, and I'll begin with Benami law now. For this reason, most common ingredient found in violation of laws related to economic offences is that transactions done are Benami in nature. That is what the findings of the investigation is. Because a wrongdoer would try to conceal it, mask it, hide it, disguise it, etc. Therefore, Benami law provisions will almost likely be attractive. What exactly is Benami law? What exactly is a Benami transaction? इसको मैं कुछ इस तरह से आपके सामने बात रखता हूं कि जहां ड्युअलिटी आती है वहां बेनामी लॉ आ जाता है, ट्रांजेक्शन बेनामी आ जाता है। इट्स ऑन द सिमिलर पैरामीटर। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में उसको प्रॉब्लम तब महसूस होनी शुरू होती है जब उसकी लाइफ में ड्युअलिटी है। जब तक मैं सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड फील करता हूं, एक हूं, मैं रियलाइज करता हूं, तब तक मैं कभी बेनामी नहीं, तब तक मैं कोई प्रॉब्लम फील नहीं करता। प्रॉब्लम आती है और चली जाती है। जैसे मुझे लगता है मैं हूं, अलग हूं, उस दिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाता। प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम, वेरी आ गई।
Similarly here, in a given situation, एक प्रॉपर्टी का ओनर एक होना चाहिए. ओनर वाली सिचुएशन अलग रखते हैं. से मिस्टर बी इज ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी. पिक्चर में एक ही प्रॉपर्टी है, उसका एक ही ओनर है. अगर यहाँ दो हुए तो ड्युअलिटी आ जाएगी. So A wanted to buy the property and A said to B, okay, I am giving you the payment. You execute the deed in favor of C. And he does it like that. Gives payment, deed is executed in favor of C. And he makes a tacit arrangement with C. You will hold the property on my behalf for my benefit, and I will exercise the full dominion and control. Under Benami law, C has been addressed. Now two persons have come into picture. A, B has gone, but at a given point of time, A and C both are into the picture now. Instead of one, two persons have come to the picture. C, who is ostensible owner, registered owner in the eyes of law and in the eyes of public. A, who is actually the owner behind the C, who is enjoying the fruits of the property. Under Benami law, C has been categorized, addressed, held as Benamida, and A has been addressed as beneficial owner. And the subject property has been addressed as Benami property, which is liable for attachment. And Benami proceedings begin with attachment of the properties, attachment of the property. That is the first consequence. Second consequence would be fine and prosecution on how many persons? A, C, and anybody else who has advised them, as I mentioned earlier. So these are the consequences for execution of a Benami transaction. So there must be some exceptions to it, otherwise it will be very harsh. Exceptions are also minimal. Now first, before I come to the exceptions, in fact, this is only one type of classic type of Benami transaction, whereas section 29A, 2(9) brings out four parts of Benami transaction. Part A, Part B, Part C, Part B. Part A is what I have already read. Part B says where property is held in the fictitious name. Part C says where owner is not aware of the ownership or denies the ownership. Suppose the person says, this property, oh, I am not the owner of this property. I don't know why I am registered, why it is in my name, or etc. etc. So he becomes Benamida under law. Immediately on seeing this, सरकार कहती है अच्छा किसी की नहीं है, आपको नहीं पता किसकी है, आप नहीं ओनर, ठीक है, हम ओनर हैं. It becomes property of the government. Then clause D, sorry, the clause property B says if property is held in the fictitious name. Part D is very important. 2(9)D. डिपार्टमेंट आज सबसे ज्यादा नोटिस 2(9)D में इशू कर रहा है, वहां पर जहां पर सेक्शन 68 या 69 में एक्शन फेल हो गए, which says if pair of consideration is not traceable or is from 4 years back, I got an opportunity to author an article. The title of the article was How Far and How Long the Menace of Additions under Section 68 and 69 shall continue to hold on the SSCs under new Benami law. At that time, people did not understand what I am trying to say. But that is what happened before us. So, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सर्च वाला, जहां सरेंडर हुआ था, वो 2(9)D में ही, या जहां पर लोन्स प्रूव नहीं हो पाए, जहां पर परचेजेस बोगस प्रूव हो गई. अभी एटलीस्ट मोर देन 100 to 100 notices have been issued by PP1 and PP4 Delhi about this alleged bogus purchases. Supplier is bogus, so that means transaction has been done Benami. Exceptions, only 4 exceptions are there. Person acting in fiduciary capacity, Karta, spouse, child, own spouse of child. Because this was also one of the questions. Whose spouse of child? Brother, sister, lineal, descendant or ascendant? जी अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, यहाँ है. तो अगर आप सिस्टर के नाम से लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, बेनामी नहीं होगी. बस 2 ही शर्तें हैं, तो आपको भी जॉइंट ओनर होना पड़ेगा, और दूसरा आप कंसिडरेशन नॉन सोर्सेस से दोगे, अपनी ब्राइब मनी से या इलीगल मनी से या अनटैक्स मनी से नहीं दोगे. दिस इज इट. Without joint owner, sir? बेनामी.
कारण है आपने अब सिस्टर के नाम से या मदर के नाम से किया, तो सरकार ये कहती है समर्पण भाव से आप सिस्टर की ना सिस्टर की मान लो, रक्षाबंधन आ रहा है, फिर अपने आप और मत बताओ। पूरी सरकार कह रही है हम आपको ऐसे डबल काम नहीं करने देंगे, डबल स्टैंडर्ड, पूर्ण समर्पण भाव। You are going to get gift of the property on the coming Rakshabandhan. Which brother is giving? आजकल मदर एक्सेप्शन केस में क्या है? आजकल लड़कियां भी देने लगी है, राखी भी बांधती है, गिफ्ट भी देती है। गिफ्ट पहले है, राखी बाद डिसेंडेंट में आ गए, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सब इसी में आएंगे, और यही है बस, इधर उधर नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, कहीं आप सोचो कजिन या चाचा ताऊ नहीं, डिसेंडेंट स्पाउस चाइल्ड में जॉइंट रिलेशन भी जॉइंट में नहीं, जो स्पाउस और चाइल्ड में नहीं है। वो भी ओन स्पाउस। लेकिन इसके पीछे कारण है, एक्चुअली बेनामी लॉ में डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट टेंशन आ रही है। किसी को टेंशन नहीं है मेरी बेनामी प्रॉपर्टी ना पकड़ी जाए, किसी को टेंशन नहीं है मेरा बेनामी रिश्ता ना पकड़ा जाए, तो जैसा फिर टेंशन होती है वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वो क्लियर हिज और हर स्पाउस लिखा हुआ है। सर स्पाउस और ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हो? नो, ये सर बिल्कुल इतना ही है, ना कम ना ज्यादा, जितना है। अगर आप सेक्शन में फॉलो नहीं करता बेनामी है। नो मींस नो, और व्हाटएवर रीजन नो स्कोप ऑफ मोटिव, उससे हम ही आते हैं। और करता हूं सर, इसमें एक आ रहा है ये ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट या बैंक की प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ओन सोर्स इन द फेवर ऑफ ट्रस्ट, तो वो भी एक्सेप्शन में आएगा ना हमारे? हाँ देखो, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में बहुत कुछ चीजें बचेंगी, जो बेनिफिट मिलेगा फिड्यूशियरी कैपेसिटी मिलेगा, provided it is a genuine. We got a case recently, it is published in newspapers also. Cash was found in locker of the bank. Employees clearly stated, this belongs to my employer. Employers का statement हुआ, they said yes, it belongs to us. So tax was imposed on them, that's a different thing. Cash around 10 crore was there. But since it was not a case of Benami because nobody claimed ownership, employee did not say I am not. Suppose the employee would have said I am owner. Later it would have been found no, he is not the owner, he is lying. Then it would have been Benami because he claimed ownership. In case of immovable asset, ownership is claimed by registration. But in case of movable, somebody will have to put a claim. मैं अगर कस्टोडियन ही हूँ तो मैं फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हूँ ना, तो मैंने बेनामीदार कहाँ से हुआ? बेनामीदार होने के लिए मेरा ओनर होना जरूरी है, मैं कह नहीं रहा था ओनर, सर है ही मेरे मालिक का, ऐसा मालिक ने भी कहते हैं हाँ जी हमारा, तो बेनामी नहीं होगा। अदर लॉज में जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन व्हिच इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट क्वेश्चन ऑफ द कंट्री टुडे। मैनी केसेस आर गोइंग ऑन, बट वी हैव द बेनिफिट ऑफ टू जजमेंट्स, वन दिस, एक चेन्नई से भी आया था जजमेंट, ट्रिब्यूनल का ही है दोनों। पहले वाले का नाम है जितेंद्र पुजारी, व्हिच वी आर्ग्यूड, इट्स अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट जजमेंट पब्लिश्ड इन कंट्री। हाँ जी जी, नेक्स्ट सर। सर एक क्वेश्चन, ट्रस्ट ने सपोज को प्रॉपर्टी सेल करी और उसमें 20 लाख रुपए उन्होंने नंबरिंग में सेल की और 50 लाख रुपए सपोज नंबर 2 में दिया उन्होंने, और वो चीज डिपार्टमेंट में आ जाती है कि इन्होंने कैश यूज करके इसमें लिया है। प्रॉपर्टी जो परचेज की गई उसमें सिर्फ एक ट्रस्टी ने सारा का सारा अमाउंट पे किया, बाकी ट्रस्टी जो थे वो सिर्फ सारे उसमें ट्रस्टी थे, तो उस केस में बाकी ट्रस्टीज की क्या लायबिलिटी बनती है? सर आप बेनामी एंगल से पूछ रहे हो पीएमएलए एंगल? सर मैं दोनों एंगल से पूछ रहा हूं। देखो, as I said, where the cash portion is involved, property was sold or purchased? Sold, sir. Sold. Where the cash is involved, the cash has, you mean to say he received the cash only. He received. So implications will be under income tax law, stamp duty law, but it has nothing to do with Benami, nothing to do with PMLA. Implications will be there, but in the concerned laws. So you were talking about due diligence of the cash. We have not heard how that Due diligence of cash. received. You have to ask the other person how you procure that cash. If I am selling a property, what is the sources in hands I must know. That is what I am saying. Genuine sources से मैं लूँगा तो अच्छा रहेगा. If the sources are not genuine, I may face music in any point of time. That's all. उसने अगर उसके पास illegal money थी, उसने purchase की, तो the trade will travel to you. That's the only thing. So these are some of the questions. थोड़ा सा और इसमें क्योंकि इससे आप
बाय कर रहे हैं. Sir, only limitation is कि now next powerful speaker is there with us. Why to deprive you from the benefit of this? So I will immediately cover some of the prominent questions in the Benami. कि सबसे पहले तो क्या U-turn allowed है? Sir, many questions I am taking. First of all, whether U-turn is allowed in this law? No U-turn is. No U-turn is allowed. No U-turn allowed. इतनी देर में आपने बेनामी कर ली तो करेक्शन का स्कोप नहीं है. Then property vests with the government. We must know. तो करना ही नहीं है बेनामी का. Then दूसरा टाइम लिमिट. अभी हम पास्ट टाइम लिमिट छोड़ देते हैं. अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि फ्यूचर टाइम लिमिट क्या है. कि आज अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स, विद इन हाउ मेनी इयर्स दैट ट्रांजैक्शन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द डिपार्टमेंट. एनी आइडिया? समय अनंत है. इसका प्रारंभ है वहां से पिक किया. जो मैं अभी आपको बात कर रहा था सर, मैंने तो इससे लाइफ के प्रिंसिपल समझे. बिल्कुल वो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं गीता है उनका पूरा उनसे पूरा प्रिंसिपल बोरो करके यहाँ उतारा है बेनामी का. समय अनंत है, इसका प्रारंभ में अनंत है. क्या समय से बांधना? तो नो फ्यूचर टाइम. एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रोफाइल, एनी क्लास, ईश्वर की नजर में सब बराबर. क्या कुछ ने थ्रेशोल्ड क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी कवर्ड है, कौन पर्सन कवर्ड है, सब बराबर है. कुछ भी लोग गलत काम है, बेनामी है तो बेनामी है. वो नहीं चाहते आप बेनामी काम कोई भी करें, बेनामी संपत्ति दे, बेनामी जीवन हो. Any structure, listed, unlisted, corporate, non-corporate, all are being hit if they have done anything benami. Any intention कि सर गलती से बेनामी हो गई, मेरा तो मतलब नहीं था, मैं तो सिस्टर को देना चाह रहा था, आपको गलती से मैंने अपने आप को भी ओनर दिखा दिया. बेनामी है तो बेनामी है. इंटेंशन का स्कोप ही नहीं है. हाँ, सेक्शन 53 में जब खेमका जी केस लड़ेंगे आपका प्रोसिक्यूशन में, तो आप कहना सर मेरा मोटिव नहीं था, उसमें क्या स्कोप है वो उस टाइम डिसाइड हुआ. प्रॉपर्टी तो सरकार की हो गई इमीडिएटली द मोमेंट इट इज प्रूव्ड एज बेनामी. बोनाफाइड परचेजर्स, उनका क्या होगा? तो मैंने किसी से प्रॉपर्टी ली, उसकी बेनामी थी, तो क्या प्रॉपर्टी अटैच? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रोटेक्शन है सेक्शन 27 में, बट उसमें कुछ कंडीशंस है. कंडीशन पूरी होंगी कि जेन्युइन आपकी परचेज है, आपने फुल वैल्यू दी है, आपको पता नहीं था बेनामी है, ओनली देन यू विल import one such case from Rajasthan. Also in the case of it's a published order, Kavita Infrastructure and Virgo Township from Jaipur and Kavita from both coming from Tribal, beautifully authored judgment. Can read that. उसमें conditions पूरी हुई तो ही प्रोटेक्शन मिला. सर ये तो वैसे तो अगर डिपार्टमेंट बिल्कुल इस बात पे जाता है कि आप बोनाफाइड प्रिंसिपल हो ही नहीं, तो दे कैन से ड्यू डिलिजेंस में रजिस्ट्रार के यहाँ जहाँ प्रॉपर्टी थी वहाँ अटैचमेंट इन्वोक हुआ, कब छूटा कब नहीं, लेकिन पता तो आपको लग ही जाएगा. दे कैन से नो बेनामी का मतलब, सॉरी आप ये सोच रहे हैं कि सर वो बेनामी डिक्लेयर हो गई हो गवर्नमेंट से. वो नहीं, आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी बेनामी है, अटैच नहीं हो वो अलग बात है. अटैच होगी तो वो अलग मुद्दा है, वो तो आप खरीद नहीं पाएंगे. अभी वो अटैच नहीं हुई, आपको लेकिन पता है बेनामी है, अभी डिपार्टमेंट को नहीं पता बेनामी है, आपको पता बेनामी है, और आप ये प्रूव हो गया आपको पता है, फिर भी आपने ली, फिर भी मिलेगी प्रोटेक्शन. बिकॉज कंडीशन है यू शुड हैव नो नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग बेनामी और बेनामी ट्रांजैक्शन. दिस इज द कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. देन मैंने 100 रुपए कमाए और मैंने 30 रुपए टैक्स दे दिया, 70 रुपए बचे. अब मैं सोचूं मैं अपने फ्रेंड के नाम से प्रॉपर्टी ले लूं, क्या लॉ अलाउ करेगा? नहीं, मैं टैक्स पेड बनी है, जैसे मर्जी यूज करूं. सेकंड नहीं, आपकी टैक्स पेड है तो यू डू नॉट गेट द लाइसेंस टू किल. तो नो बेनामी इवन फ्रॉम टैक्स पेड. Multiplier effect, which we have already discussed. This is very, very important. No compensation or any damage, etc. Let us skip these things now. This already discussed. कि यूएस कंपनी और मॉरिशन कंपनी का है कि अगर मान लो कोई यूएस कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है शेयर्स में थ्रू मॉरिशन रूट, और कार इन्वोक करने की वजह से उनका ट्रीटी बेनिफिट डिनाई हो गया, तो जो अंडरलाइंग शेयर्स हैं यहाँ, दे कैन बी अटैच्ड एज बेनामी एसेट, ट्रीटिंग मॉरिशन एंटिटी एज बेनामी, द यूएस एंटिटी एज beneficial owner. Then SBO concept we already discussed. Then this we skip. Let us skip them. This NRI example is very important. NRI friend wanted to invest in agricultural land in India, and he could not have done it directly, so he requested his Indian friend to buy land. He sent the money. Indian friend bought land, and during the course of such he said कि सर मेरी नहीं है ये ओन मनी जो पे किया सब उन्होंने किया, मैं तो खाली उनके बिहार से यहाँ मैंने खरीद दिया सारी प्रॉपर्टी. If this is the scenario, then the property was immediately attached
NRI फ्रेंड का प्रोसिक्यूशन, इंडियन फ्रेंड का प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, उनको बेनामी डिक्लेयर कर दिया, NRI फ्रेंड की वेट हो रही है कब आएंगे उनका ही प्रॉपर्टी हियर एंड प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड। FEMA का वायलेशन इन एडिशन टू दैट दिस बेनामी, दोनों हो गए, FEMA बेनामी बोथ, बिकॉज़ बाइंग एग्रीकल्चर लैंड इज प्रोहिबिटेड अंडर फेडरल लॉ। टू एक ट्रांजैक्शन, टू ऑफेंसेस। ब्लैक मनी एक्ट में सिर्फ एक ही बात कहनी है, अगर हम अभी पास्ट ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं तो आगे से जो हमने ध्यान रखना है कि इन द इनकम टैक्स रिटर्न it is to be ensured that if the resident in India has any foreign income taxable in India, that must be disclosed in appreciating. Similarly, if any foreign interest, foreign asset, or any interest in foreign asset, or even being signatory to the bank account is held, that much. Because the definition of section 2-12 undisclosed foreign income and asset quite vague and differently worded than what the heading says. Heading says undisclosed foreign income and asset. If you read the text of the section, the word undisclosed is not there in the section. It says the asset should be satisfied. You have to satisfy, you have to explain to the satisfaction of the assessing officer. So mere disclosure will not be enough. Then A disclosure, B no tax evasion. Two things have to be established. None of them should be missing. Tax evasion नहीं है, लेकिन disclosure भी नहीं किया, तो भी गड़बड़ है। क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर का प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी शुरू होगी, उसका प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, वो होगा ही होगा, उससे बच सकते नहीं बच सकते, केंद्र ही बताएंगे। नो डिस्क्लोजर एंड फुल डिस्क्लोजर एंड नो टैक्स इवेजन, बोथ थिंग्स विद रिगार्ड टू फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम। तो फ्रेंड्स, आई सर एक ट्रांजिशन में NRI is coming to India, or rather he has come to India, but last year remains NRI. Last year return में वो NRI. law says those assets which were acquired while he was resident, उनके लिए responsibility, even if he is NRI today, but suppose he is filing a return in India for some income earned in India, so those assets which were acquired while he was resident, those must be disclosed. And suppose he comes back and he has some foreign asset, after coming back he becomes resident, then he may forget to disclose foreign assets, he must disclose. बैंक अकाउंट खोलना बंद करना भूल गए, अभी हुआ ना एक एग्जांपल, that is very very important. LLM student बाहर गई for carrying out for doing LLM in UK. When she came back, she forgot to close the bank account in UK. Immediately came the notice under section 10 of BMA. तो सरकार ने कहा देखो तुम LLM करके आई हो, तुम्हें अच्छा लॉयर बनना है, तो हम आपको ट्रेन करते हैं, तो पहले आपके केस से ट्रेन करते हैं। पहला उसको अपने नोटिस नहीं दिया, एक्सप्लेन करो why did you not disclose, not she see सर ये बैंक अकाउंट था, उसमें छोटी सी अमाउंट थी, I forgot to close, that's it. Okay, explain the sources, explain this, like that. So ये गलती हो सकती है, इसलिए मैंने केस स्टडी लिया कि हम बैक कोई भी बाहर से आ रहा है, कोई एक्सपेक्ट कोई जो यहाँ से बाहर गया था वो वापस आ रहा है, कोई स्टूडेंट वापस आ रहा है, रेजिडेंट बनेगा बैंक अकाउंट केस, अदरवाइज में क्रिएट सिंड्रोम। So as I said, है कि ये अमाउंट से बेनामी शुरू ईश्वर की नजर में फर्क होता है। हाँ, समझ में नहीं आया, गीता को पढ़ना, ध्यान करना, गीता अगर गीता में कहेंगे तो श्री कृष्ण क्या कहेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट में विश्वास करते हैं ना। किसने कहा है मैंने, वेलकम टू द फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई, उसके बाद उसका बेनामी पता लगता है, फिर अटैच होती है। आज प्रॉपर्टी परचेज करी, ठीक है, मैंने बोनाफाइड मैनर में परचेज करी, सेलर को पेमेंट करी, सेलर का डिटेल्स, तो आप बोनाफाइड बायर वाला हाँ, प्रोटेक्शन चाहते हो सेक्शन 27 में, उसके ऊपर मैंने बोला था, उस टाइम शायद आपकी थॉट सिस्टम कहीं और थी, आप पुरानी वाली किसी स्लाइड पे अभी अटके हुए थे। मैंने कहा था सर 3 कंडीशन होनी जरूरी है, ए आपको बेनामी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बी आप पूरा कंसिडरेशन देंगे जितना होना चाहिए, ऐसा ना 10 करोड़ का माल आपने 1 करोड़ में खरीद दिया, तो ऐसा मुझे पता ही नहीं था बेनामी, आपको पता है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में आ रही है, फिर भी खरीदी आपने, और आपको पता था कि आपकी बात तो शर्मा जी से हुई थी जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, और रजिस्ट्री वाले दिन आ रहा है उनका ड्राइवर रजिस्ट्री कर रहे हैं, उसके नाम से प्रॉपर्टी है, और फिर भी आपको सर मुझे पता नहीं था, और आपने कभी ड्राइवर से डील नहीं किया, आप उसका हुलिया नहीं बता पा रहे, आपने सर शर्मा जी से डील किया, ये सब बातें आ जाएंगी स्टेटमेंट में, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपको नॉलेज थी बेनामी ट्रांजैक्शन। तो वन हैज टू बी जेन्युइन एंड फोर्थराइट, ड्यू डिलिजेंस, विजिलेंट, डिलिजेंट, राइट, यस इन अप्रोच, बेनिफिट ऑफ एक्चुअल
चीज है, आज की डेट में जॉइंट ओनरशिप या जॉइंट डेवलपमेंट जब होती है, तो जो डेवलपर होता है वो यूजुअली पहले अपने नाम पे सिर्फ पावर अटॉर्नी लेके घर बना देता है। अब उसके बाद वो डायरेक्टली ओनर से सेलर को मतलब पेमेंट करवा देता है, तो विल दैट बी कंसिडर्ड एज बेनामी? देखो ये बड़ा डाइसी इशू है, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस, बट यहाँ बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास एक जीडीए है, एंड जीडीए इफ इट इज रजिस्टर्ड तो फिर वैसी बातें खत्म हो जाती है, तो बेनामी का एंगल खत्म हो जाता है तो उसमें। बट आपका इशू बड़ा राइज है, इसमें केस टू केस बेसिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। यहाँ ऐसे कुछ नोइंगली अननोइंगली बेनामी एंगल इंफ्यूज हो सकता है, एंड वी नीड टू बी केयरफुल। हम ऐसे कुछ इश्यूज अभी हैंडल कर रहे हैं जब कॉर्पोरेट केसेस में कुछ बेनामी एंगल्स आ गए हैं जहां सोचा नहीं था, जैसे लैंड बैंक कंपनी। नाउ यू कैनॉट acquire 2000 acres of land directly entering your circuit domain, so you create your infrastructure company, you create your arms by creating land bank companies, वो कंपनीज एक्वायर करती है। तो एक जगह सर्च हुई, लैंड बैंक कंपनीज के डायरेक्टर कहते सर हमें कुछ नहीं पता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के चेयरमैन साहब है सर, जो कहते हैं हमको वही करते हैं सर, हम कुछ नहीं जानते सर। इंटरनेट डिपार्टमेंट की सर्च की, मैटर रेफर हुआ बीपी को, ये शुरू का मैटर है 2018 का बॉम्बे का। बोला अच्छा वो तो ये सारी कंपनी बेनामी है, आप लोग डमी डायरेक्टर हो, और ये आपकी कंपनियां बेनामीदार हैं, और ये जो आपने जितनी लैंड ली है बेनामी प्रॉपर्टी है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बेनिफिशियल होल्डर है, 2000 acres attached, he fought it out, got the relief, but ties भी। शाहरुख खान की जो प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, मन्नत वाली नहीं, अलीबाग बंगलो वाली, वो इसीलिए अटैच हुई थी, डायरेक्टर उन्होंने जो रखे थे वो नेटिव से, उस कंपनी में उनके नाम से प्रॉपर्टी ली थी, डेजा वू फार्म्स था कंपनी का नाम, आप पढ़िए इकोनॉमिक टाइम्स में मिलेगा। अभी हमने एक केस रिप्रेजेंट किया था अजीत पवार साहब का, जो बिगेस्ट केस होता करते हमारा नाम भी मिल जाएगा ऑफिस में। इन दैट केस आल्सो the relief has been given only on this ground because the department could not prove any single money has been given by him towards the assets of the companies which were being alleged to be Benami properties, Benami companies of the gentleman. So on that ground, relief has been given. So, So in your example of A, B, C, yes, with A and C are the guilty people, but B is not at all responsible. अगर बी को ये पता था कि भाई ये बेनामी रखने वाले हैं, हो सकता है उसको पता है ना, वो तो कहते हैं सी के नाम से ले रहा हूँ मैं, पैसे दे रहा हूँ, तो बस सी के नाम से सी है मालिक, नहीं होगा। अगर उसे पता था, पता भी है तो फिर वो भी ही नोइंगली लेटिंग इट हैपन, अगर उसे पता है ऐसा होने वाला है, वो किस सर्विस में करें? बेनामी प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 53 एंड 54, उसे पता था ये बेनामी हो रहा है, उसे मना करना चाहिए था। वेलकम टू आप जानबूझ के आपने होने दिया है गलत काम, आपके हाथों, फिर पता तो था ही उसको पेमेंट वजह से आ रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ये ने वैसे कहा पेमेंट मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई लोन देना था उसको, प्रॉपर्टी सी ले रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये भी हो सकता है। और वो जो ये कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि जो आप कह रहे हो पता था उसको, दोनों तो सेकंड सिचुएशन में जब पता था देन ही विल बी लायबल फॉर। मतलब ड्राइवर के नाम से अगर खरीद रहा है तो you should say I am not selling. अब ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है, इसको उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि आपको पता हो काम गलत हो रहा है और फिर भी आप उसके पार्टी बनते हैं, तो म्यूजिक फिर सारे सुनेंगे जितने पार्टी में थे। सीधी बात ये है, हाँ आप डिवीजन थे तब लॉ विल प्रोटेक्ट। सर बायर कैसे ड्यू डिलिजेंस करता है ताकि सेलर सर मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे, जैसे मैंने कहा कि आपकी डीलिंग किससे हो रही है, वही आ रही है क्या, प्रॉपर्टी मार्केट रेट पर है। अभी एक केस में मेरे क्लाइंट का डील कर रहे हैं, उन्होंने बताया सर वो खुद तो आए नहीं, जिनसे बात चल रही थी, मैंने कौन आया, बोले ये आए हुए हैं, मैंने कहा रिलेशनशिप पता करो, पूछो क्या है, उनसे बातचीत करो, मिलो, देखो वो खुद रियल ओनर हैं, मैंने हाँ सर उनके नेफ्यू ही है। सर अ जीपीए होल्डर सेल्स द प्रॉपर्टी, तो ये माना जाएगा पीएमएलए में या नहीं माना? नहीं, सबसे पहले तो पीएमएलए की बात नहीं है, बेनामी की बात है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जीपीए होल्डर जो है उस टाइम भी बेनामी हुआ नहीं हुआ, बिकॉज इफ यू आस्क अस, इनका जी ने कई जगह एग्जांपल कोट किया कि कनॉट प्लेस में मोर देन 50% प्रॉपर्टीज वुड बी सच वी आर ऑन पार ऑफ अटॉर्नी, वे बेनामी एंगल कैन बी एग्जामिन्ड, बट उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी आया नहीं, से कोई एक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज जीपीएस में कुछ कंडीशन है जहां एग्जाम्पशन होगी, अदरवाइज वो भी बेनामी के केस में आ जाएंगे जीपीए केस, वी हैव टू बी केयरफुल। तो आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स अस टू डू इज दैट जो हमारा है उसी को हमारा समझे, जो हमारा नहीं है ना समझे ना किसी को बताएं, जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें। तो देयरफॉर गेट रिड ऑफ बेनामी लाइफ एंड लिव रियल लाइफ,
Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। तो हमें देखने को ये मिला चाहे PMLA हो या ब्लैक मनी हो, आप जैसे हो वैसे ही। कुछ भी अगर आपने उसके अंदर बदलाव करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं ये एंगल्स आपके सामने जरूर आएंगे। थैंक यू सर। और अश्विनी सर को हम अपने मोमेंटो से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आओ प्रदीप सर, आपके आगे प्लीज। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।